बातें नज़र आती थी. आई फेल्ट इट कुड बी डन बेटर. द वे पीपल वर बीइंग कॉम्पेंसेटेड स्पेसिफिकली वो समथिंग जिस पे मेरी बहस रहती थी. इसके मुझे वो मौका मिला कि मैं 6 महीने यहाँ भी रह के देख लूँ, 6 महीने वहाँ भी रह के देख लूँ, 6 महीने वहाँ भी रह के देख लूँ, इस सर्कमस्टांस में भी, उस सर्कमस्टांस में भी. सो दैट फ्रीडम टू बी एबल टू डू something you're passionate about is an essential part of a healthy person. तो आज हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे आपकी जैकेट के बारे में Sure. और थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे. जरूर. So the whole idea is कि we gonna discuss about your journey कि आपने किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट लिया and how did you come across कि यार मुझे अपनी कंपनी बनानी है. What was that journey? So I used to work for a software house जिसको हम यहाँ बोलते हैं called Zever, Cavalry Ground में. And I used to do a decent cushy job. I was a director there when I left. But मुझे वो जो जिस तरह वो चल रहा था ना उसमें कुछ बातें नज़र आती थी. I felt it could be done better. The way people were being compensated specifically was something जिस पे मेरी बहस रहती थी वहाँ. And also that work-life balance is very difficult in that sort of environment. मुझे ये when I left there I was I think 31 or 32 something like that. And मेरी शादी हुई भी थी और मेरा पहला बच्चा हुआ था. And I was like यार ये how am I going to make ends meet? और अगर even if I do manage to make ends meet, how am I going to build a house? And how am I going to change my car and etc. And ailing parents and whatnot. तो वो concerns trigger हुई. And I realized कि वो structurally वो those organizations are not designed to give you that. अभी मैं उस organization के तकरीबन apex पे था. और उस वक्त के तो खर्चे पूरे हो रहे थे और जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ते हैं if you're a critical resource कंपनियां बढ़ा भी देती हैं पैसे. लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से दे वांट टू कीप यू बाउंड. तो बहुत ज़्यादा आप उसमें स्पेस निकाल नहीं सकते. प्लस इफ आई थॉट ऑफ थिंग्स अदर देन माई सेल्फ, यानी मैं अपनी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वो कभी भी नहीं अचीव कर सक रहे थे उसको. सो मैं आई फेल्ट कि सिस्टेमिक चेंज है जो मुझे आई वांट टू सी अराउंड मी एंड आई द ओनली वे टू डू दैट इज़ टू डू समथिंग ऑन माय ओन. And that then prompted me to leave the company and start Allied. So you would say that back in since you started working up till now, ज़्यादातर जितनी भी companies हैं they are not designed in a way कि जहाँ पे कोई भी employee काम करके अपना घर बना सके या excel कर सके या अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके. Would you say that कि companies are not designed like that? Yeah, they're not. They're designed to fulfill the needs of the shareholders, not the staff. The staff. And that's somewhat motivated you कि यार मेरा बच्चा भी हो गया and I need to grow in life and the only way that you found was कि यार मैं अपना एक काम शुरू कर लूँ. अच्छा, काफी लोग ऐसे बीच में उनको ये भी ख्यालात आते हैं इसी स्टेज के अंदर कि यार एंड्स मीट नहीं हो रहे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं कहीं बाहर के मुल्क में चला जाता हूँ. एंड आई हैव नोन यू एंड आई नो दैट यू वर्कड इन US and you've traveled there, you've lived there for a while. Yeah. So why didn't you opt for that option? Well, I am very fortunate. I think I had traveled quite a bit before I got to this point, and I had really come to the conclusion that at the end of the day, for me at that age, it was very clear कि मैं ज़्यादा खुश हूँ यहाँ. Now looking back, I can give you a rationale of why I was happier there. It's because most people are looking to fulfill needs. उनकी कुछ ज़रूरियात होती हैं. जब आप होते हैं ना 22-25 साल के, तो आपकी सारी ज़रूरतें कहीं ना कहीं जाके पैसों से जुड़ जाती हैं. आपको सारे घर वाले रिश्तेदार सब इस चीज़ पे आपका दिमाग खा जाते हैं कि तुमने पैसे कमाने, तुम्हारी ज़िंदगी में मकसद ही सिर्फ यही है, तुम एक मशीन हो पैसे बनाने की. Once you hit that milestone, you realize you have other needs, right? You have social needs, you have family की needs, creativity की, inspiration की, मजहब की, spirituality की needs आपकी आ जाती हैं. वो जब आप यंग होते हैं तो आप उनको नाम नहीं दे पाते, पर आपको ये समझ आ रही होती है कि मैं यहाँ खुश हूँ और यहाँ नहीं हूँ.
So I just sort of followed my instinct and I realized कि मेरे लिए यहाँ happier है. What I was very fortunate in, which I think most people are not, इसके मुझे वो मौका मिला कि मैं 6 महीने यहाँ भी रह के देख लूँ, 6 महीने वहाँ भी रह के देख लूँ, 6 महीने वहाँ भी रह के देख लूँ, इस circumstance में भी, उस circumstance में भी, to be able to get a very first-hand view of what was causing it. Like I said, today I can rationalize it and I can tell you कि one should look at it holistically and see कि आपकी सारी ज़रूरतें किस चीज़ में पूरी हो रही हैं. उसमें सिर्फ आप पैसों को ना गिने, आप इस तरह की चीज़ें भी देखें कि अगर आपको अपनी माँ बाप के साथ टाइम मिल रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, पुट अ डॉलर वैल्यू टू दैट, फिर आपको अंदाजा होगा कि उसकी कितनी. एंड स्पेशली योर किड्स योर दे हैव द फैमिली हियर, वहां पे तो इट्स अ टोटल डिफरेंट कल्चर दैट दे विल बी प्राउड ऑफ. बिल्कुल बिल्कुल. उसको व्हाट people will do is they'll put up a pros and cons but they can't quantify it. But money you can quantify, right? मेरा जो इंग्लैंड में दोस्त बैठा है वो इतने लाख कमाता है और मैं इतने कमाता हूँ, and so the comparison looks very one sided कि हाँ जी ठीक है वहाँ तो सब अच्छा, but add to that the value of your time with your parents or something. Let's factor that in then. See कि how many dollars is that worth. Yeah. तो कुछ आपका दिल आपको गाइड कर रहा होता है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग ज़्यादा रैशनैलिटी मांगता है, फिर उनको वो रीजनिंग. So back then, so now you can rationalize it. Does that mean that back then you couldn't rationalize it? No, back then I could not. I was really just following instinct, and I think that's how most people do it. They will have a, खासतौर पे जो पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं ना, they have a projection of the future. They don't even know how green the grass is on that side. कहीं से सुनी है, कहीं से देखी है, कुछ इमेजिन की है, मे बी टीवी सीरियल से या मूवीज से या whatever से. You imagine life to be a certain way and you compare that to the life you have, and then you take a step, and usually the step is to leave Pakistan and go abroad. Once you get there, it's all about defending that situation. Right. Nobody is rationalizing beyond that point. उसके बाद तो बस फिर ये है कि अब मैं आ गया हूँ, अब मैंने निभानी है, 6 महीने साल में आप सेटल होते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, so there is really no turning back after that. बहुत मुश्किल है उसके बाद वापस आना. Especially in that age span जो आप बात कर रहे हैं. Yeah. Once you have your family started up, तो फिर it might be difficult to move again and again because it's just not you. You have to consider your family situation as well. Yeah, absolutely. I think everybody has a situation, and they should weigh it holistically. That's my point. But people really do. So what do you think? अगर आप predict करें, if at that point, if you have moved to US या any other country abroad, so what do you think? Where would you be now if you were there? अच्छा, I have a lot of friends there still. जो मेरे साथ के class fellows थे, the GI के batch that I was in, 150 की हम class थे, 130 some are abroad. मैंने list बनाई थी, मुझे पता. And I do meet them. And they do tell me कि अगर तुम बाहर होते तो तुम फला होते और तुम बाहर होते तो तुम फला होते. I keep reminding them कि अगर मैं बाहर होता तो कुछ मैं पैसे तो ज़्यादा बना रहा होता और शायद मेरी पोस्ट भी कोई बड़ी होती है, शायद मैंने कोई दुनिया में कोई ग्राउंड ब्रेकिंग काम भी कर लिया होता, but I'd be less happy. That's the basic point. The value of something cannot be measured in careers and dollars alone. That's definitely one metric. You need enough money to make a decent living. I've been very fortunate here. And that's what we've tried to build up here, is a platform that gets other people to that stage. लेकिन एक खास हद के बाद जब आप पैसे कमाने किसी को सिखा देते हैं तो उसके बाद फुलफिलमेंट लाइफ की जो है ना वो इन चीज़ों से नहीं आती. So how did you get to the point? आप जिस phase की of life की बात कर रहे हैं, again I would say as a psychologist you've been very fortunate that you've understood that यार this is something that makes me happy. How did you get to that phase where you were clear कि यार ये चीजें मुझे happy कर रही हैं and this is something I might be able to make more money but that's not the direction that I want to go in. How did you get to that phase? Like I said, I was very fortunate. मुझे projects के लिए कभी इधर भेज रहे थे, कभी उधर भेज रहे थे, and in every situation I had to be there for 3 months, 6 months. Right. In one scenario or the other. Initially मेरा ख्याल था I studied in Sweden, so I lived there for 2 years. उससे पहले मैं इटली गया हुआ था, मिडल ईस्ट मैंने देखा हुआ था. सो स्वीडन में मैं पढ़ा, वहाँ से आई वाज वेरी क्लियर कि मैंने वापस जाना है. मैं वापस पाकिस्तान आ गया. आई थॉट कि शायद वहाँ लैंग्वेज का बैरियर है, सो मे बी दैट इज़ वाई आई डोंट लाइक दैट प्लेस एज मच.
So I came back with some positive and negative ideas about Sweden, Scandinavia. वापस आ गए यहाँ पे। जब मैं कंपनी में ज्वाइन किया तो उन्होंने विद इन अ फ्यू मंथ्स मुझे अमेरिका भेजना शुरू कर दिया। एंड आई थॉट दैट माइट बी ईजियर बिकॉज वो लैंग्वेज और कल्चर। द फर्स्ट टाइम आई लैंडेड इन LA, आई रिमेंबर आई थॉट इट्स लाइक मूवी because I had seen the airport in a movie. I had seen the way people talk, and I was raised in that format. उसी ज़बान में, उसी culture में. So I did not feel alien at all. And then I spent a few months there, and I felt कि यार नहीं, this is not for me. ये हलाल हराम के मसले, ये वो है. This is too much for me. I came back, and then I went back and forth 6 times. And then I realized कि नहीं, America is not for me. This is too much. Then they sent me to the UK. I thought वो थोड़ा पाकिस्तानी population ज़्यादा है, maybe that might be the thing for me. That didn't work. Then I went to the Middle East. कुवैत में मैंने 7-8 महीने गुजारे. बहुत अच्छी जॉब थी, but that was not for me either. So I was very fortunate in at least understanding कि मैं. So I think it was the exposure without that helped you. Yeah. I didn't rationalize my way into that decision. I really, I was very fortunate कि मुझे मेरे बाप ने या मेरी अम्मा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम वापस आ गए तो कुछ गलत हो गया। हाँ, तो ये बड़ा मसला शुरू होता है ना, as soon as you leave, वो वापसी बड़ी मुश्किल कर देते हैं घर वाले। सही बात है। So I was always welcome back, and this was always home base. अच्छा, this is something that I have experienced कि जब आप बाहर से आते हैं ना, तो रिश्तेदार जो है ना या दोस्त, वो टाइम लेते हैं। अच्छा, तो कब वापस कब जाना है? हाँ जी। तो वापसी का टाइम लेते हैं, अच्छा खाना खाना। लेकिन जब आप आते हैं ना कि यार अभी मैं इधर ही हूँ, तो फिर वो फोन नहीं करते दोबारा खाने के लिए। कहते हैं क्यों आ गए हैं, की गल है। अच्छा, इधर ही हो आप? अच्छा, चलो फिर मुलाकात करेंगे कभी। वापस मुझे जब मैं स्वीडन से आया था ना, एवरीबॉडी यूज्ड टू से दैट, तुम वापस क्यों आ गए हो? अच्छा, वहाँ नहीं कुछ मिला तो सोच लो, फिर वापस जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? वहाँ बड़े मसले होते हैं, तुम्हें नहीं अंदाजा। Everybody would give me just the most negative perspectives. और फिर आपको यहाँ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप कहते हो यार ठीक ही कहना से। हाँ, ठीक ही कहना से। आपका उस तरीके से थॉट प्रोसेस बना दिया जाता है। सोसाइटी जनरली आपको एक नैरेटिव देती है, and it is very hard to be resistive of it. So आप पूरा आपका exposure रहा, you went to different countries, you worked there, you got back, you were like, okay, this is something that I want to do, I want to start my company, वो help करेगा मुझे ends meet करने में, and apart from that, this is something that makes me happy. So in that journey when you started it, कितने लोग थे जो आपके ideas को उस वक्त, आपके दोस्त में, आपकी फैमिली में कितने लोगों ने सपोर्ट किया? एंड स्पेसिफिकली आप एक बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते, सो हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट टू इट? माय फादर टोल्ड मी नॉट टू डू इट वेरी क्लियरली. ही वाज अ प्रोफेसर इन पंजाब यूनिवर्सिटी ऑल हिज लाइफ. His idea of a good job is security. Again, that's his personality. Yeah, he needs more security than I do. I needed less as a person. So although I have a lot of sort of responsibilities, जिसकी वजह से I should be seeking security, but what I realized in my job was that the sense of security जो आपको जॉब में मिलती है ना, वो false है. One story I always narrate and might be interesting for this conversation is कि हमारा एक प्रोजेक्ट था, गोल फाइनेंशियल शायद कंपनी का नाम था. उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई 30-35 लोग लगे हुए थे, काम करते थे, और वो मेरी टीम में ही थे सारे. तो वो प्रोजेक्ट जो था ना, वो कैंसिल हो गया. गोल फाइनेंशियल बैंकरप्टेड, और उन्होंने जो हमारे पैसे ड्यू भी थे ना 3-4 महीने के कंपनी के, वो उन्होंने ऑब्वियसली कहाँ रिकवर होने थे, बैंकरप्सी फाइल हो गई. तो हमें मैनेजमेंट को एक ईमेल आई कि जी अगले 2-3 महीने जो है ना, मैनेजर्स को तनख्वाह नहीं मिलेगी. अच्छा, बट वी डोंट वांट टू रेज एन अलार्म, सो नीचे के स्टाफ को देते रहेंगे, मैनेजर्स को नहीं देंगे. तो वी डोंट वांट टू क्रिएट अ पैनिक, सो एवरीबडी जस्ट मैनेजर्स बी पेशेंट. तो आई सेड फाइन. मुझे याद है मैंने ईमेल पढ़ी, आई क्लोज माय लैपटॉप एंड आई वॉक थ्रू द हॉल डाउन टू द डोर, एंड एवरीबडी ऑन द हॉल वाज सुपर हैप्पी. वो यार कस्टमर पता नहीं किधर गया है, जवाब ही नहीं दे रहा, काम ही कोई नहीं है, रिलीज ही कोई नहीं जा रही, चलो टेबल टेनिस खेल लें, मसला क्या है. सुपर हैप्पी,
in that sense of security they were super happy, not realizing कि कंपनी के पास वक्त पड़ा हुआ है उनकी तनख्वाहें भी देने का. So most people seek security in jobs. वो अपना नहीं करते कि उसमें रिस्क बहुत है, but they don't even know कि जॉब में कितना रिस्क है, because that is abstracted away from them. So I realized that, and so when my father said कि यार तुम्हारी बड़ी अच्छी secure सी job है, you getting paid well, why are you leaving that to start this weird venture? I had other points of view on how secure that was. He was coming from a government background, ना, तो government service में तो नौकरी वाकई पक्की होती है. रिवॉर्ड नहीं होता, पेंशन भी होती है, रिवॉर्ड नहीं होता खास, लेकिन कोई खास मतलब रिस्क भी नहीं होता. तो जो So he didn't support your decision. No, he tried to talk me out of it, but then he kind of knew who I was, so he didn't try very hard. So I told him I'll give it 6 months. I have enough money for 6 months, and if it doesn't work in 6 months, I can let it go. Go back. तो कोई ऐसा, it wasn't the end of the world. I wasn't being irresponsible about it. I don't think anybody should be. आप अपने आप को मोहलत दें, मौका तो देना succeed करने का. Yeah. So that's all I did. So when you took that initiative के okay, so you had a plan कि 6 month में काम करता हूँ, and that something seems rational. नहीं चलता तो वापस मैं कोई नौकरी कर लूँगा. That makes sense. Yeah. So when you started it, what were the challenges that you faced during that phase जब आपने start किया Allied? Allied या ये tier 1 से 2 की बात हो रही है? Specifically बात करूँ कि जब आपने step in किया, you left your job and you were like, okay, मैं transition करने लगा हूँ और मैं कुछ clients को ही पकड़ने लगा हूँ, मैं अपना काम करना चाहता हूँ. Yeah. In that transition आपको क्या challenges face हुए? So वो आप जॉब छोड़ के जब भी अपना काम करेंगे ना, whether it is Allied has its own specific challenges. ठीक है. Employee ownership and all that. But जब भी आप employment से अपने काम में जाते हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपको डर लगता है बहुत शदीद, और सबसे पहला चैलेंज भी उस डर को काबू करना ही होता है. You have to kind of manage to build an appetite for that level of fear. And hopefully let that drive you. So rechannel करें आप into more energy and work harder or something. So a lot of people get very paralyzed by that fear. अब वो दोनों तरह के fears आपके ज़हन में आते हैं. काम ना मिला तो क्या होगा, अगर मेरे employees छोड़ गए तो क्या होगा. When we were very young then, we had like 2 or 3 employees. We had a very small shared office with somebody. Back then ये co-working spaces नहीं होती थी. And I think every day it was like this close to being shut down. काम नहीं मिल रहा. Every day for months. We were never that far away from it. तो वो तो stress level तो बहुत high होगा. Every day you are this close to shut down. How did you manage it? I think वो I remember having a conversation with my wife and telling her when she said कि तुम मतलब कुछ और करते ही नहीं हो, सारा दिन यही करते रहते हो. I told her कि give me 6 months. नहीं होगा तो pull me out. But what I think was lucky for me was I really enjoyed what I did. और मेरे पास एक कस्टमर था stable, so I wasn't going to fall too far. But it was a lot worse than what my job was. So I had set myself that expectation कि थोड़ा सा downturn आएगा. You have to keep reminding yourself कि इसकी ultimately upside ज़्यादा है. Whether it's in terms of money or it's in terms of time with family, etc. Autonomy, what you want to do. मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ लोगों को ड्राइव करती हैं. लेकिन even if there is a dip, ultimately this can rise higher than where you were before. In a job there is no upper side. वो जैसी है तकरीबन वैसी ही रहेगी. It's constant. हाँ, it's very constant. It's very consistent. It's designed to be that way because वो जो उसकी turbulence है उसी से तो घबरा रहा होता है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर फिर इंश्योर करता है कि वो टर्बुलेंस से एब्स्ट्रैक्टेड रहे. और दुनिया पीछे होती टर्बुलेंट ही है. सो इफ यू लिव इन दिस फॉल्स नैरेटिव कि वो कोई टर्बुलेंस है ही नहीं दुनिया में और नौकरी तो मेरी हमेशा रहेगी, यू किडिंग योरसेल्फ. आई थिंक इवन इन अ जॉब व्हेन यू गेट टू हायर लेवल्स यू कैन सी वेरी क्लियरली कि बाहर कितनी टर्बुलेंस है और अंदर कितना सुकून है. तो And would you agree कि जो आपने डर वगैरह की बात की है, the earlier the person who steps into it,
जिसके पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डर भी उतना कम होता है, और जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फैमिली की स्पेसिफिकली तो डर भी उतना ज्यादा होता है. वुड यू एग्री विद दैट? Yeah, for sure. I think responsibility ज़्यादा होती हैं तो आप your ability to take risk is limited. It's not your emotional reaction to the risk. It's just how much can you really take without ruining your entire family or something, right? One thing I say to my son, he's into various situations जहाँ डर जाता है, तो I always tell him कि डरना is perfectly all right. रुकना नहीं है. Just keep going. Right. As you keep going for long enough, you get through on the other side. So, And आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप कुछ अर्सा वो बेयर कर सकें. वो लाइक आई सेड 6 महीने के पैसे थे, मैंने कहा ठीक है 6 महीने जितने पंगे हैं कर लेते हैं. हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना से. लेकिन उसके अलावा मैं व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि जैसे आपने बताया कि विद इन दैट 6 months आई एम प्रीटी श्योर क्योंकि आपके पास टीम कम थी, दैट मीन्स कि आप द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू वर पुटिंग इन were more than you were putting in for sure. in the company, with your previous company. तो आप hours भी ज़्यादा put up करें, और मे बी उसका fatigue effect factor भी होगा कोई ना कोई. और obviously अगर आप काम पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो आप फैमिली को टाइम भी कम दे रहे हैं. स्ट्रेस भी है कि every day you shutting down. So what was your way to get out of it? But it never feels like work. When you do your own thing, it never feels like work. वो इंसान की कैपेसिटी फॉर नंबर ऑफ आवर्स जो है ना, या स्ट्रेस को कोप करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है. आपको खुद अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि आपने कभी अपने आप को इतना चैलेंज किया भी नहीं होता. बट इफ़ योर हार्ट इज़ इन इट, आपको ये ना कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा अपना एक आइडिया है, मेरा अपना एक गोल है, अगर वो अपने वाली सेंस आने लग जाए ना, तो पीपल विल पुट इन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इनटू थिंग्स विदाउट फीलिंग overburdened by it. It's only work जब वो it's something you don't want to do. Otherwise it's just something you're passionate about. अच्छा, अपना काम उन्हीं चीज़ों में करना चाहिए जिनमें आप पैशनेट है, वरना वो आपको बहुत बोझ लगेगी. अच्छा, मैंने अक्सर ये एक्सपीरियंस किया है कि whatever that you love doing, and I know people 6 month 8 month 9 month straight काम करते हैं और हार्डकोर काम करते हैं, and after that they're like okay I'm just done with it, I just need a break. और वो 1 2 3 महीने काम ही नहीं करते बिल्कुल भी. दे जस्ट वांट कि अपना माइंड सेट चेंज करें, थोड़ा रिलैक्स करें, देन दे गेट बैक टू दैट. सो व्हेन डिड यू एवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ फेज इन योर लाइफ? Yeah, many times. So I recently taken a sabbatical for a year or so. For one whole year? For a whole year. Because I could. And it's a good time to reflect. I think I would love that, in Scandinavia, by law, an employer is bound by law to give you a year off for something you want to try. So मैं अगर employee हूँ ना Sweden में, and I want to go do a startup experiment or something, my employer is bound by law to give me that year off. 1 year period. या मेरे बच्चे मैंने पैदा करने हैं तो साल की maternity जो है वो मियाँ बीवी को बुला के देते हैं. So that freedom to be able to do something you're passionate about is an essential part of a healthy person. जॉब वो देती नहीं है आपको, वो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. यहाँ पे ये है कि you can run like the rabbit and take a nap and then run like the rabbit. वो तो कछुए की तरह चलते रहने से, अगर आपके मिजाज में ही दौड़ लगाना है तो लगा ले. So what did you do in that one whole year? I thought about what is making me happier than where I was and how I wanted to get there. That's I think what I. Did you try new activities? Did you try new things? Yeah. I read up on a lot of things जो मैंने सोची थी कि मैं पढ़ूंगा. प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है वो आपको स्पेस बहुत कम देता है सेल्फ रिफ्लेक्शन की और अपने अंदर झांकने की. Right. So that is something that I spent a lot of time doing. I caught up with people, friends जिनसे that were dear to me, जो वक्त के साथ रह गई थी, रिश्ते जो कमज़ोर हो गए थे, उनको तगड़ा किया. And I'm an introvert, so I love spending time with myself and I really enjoy my company. So that's what I did. अच्छा, वो how जिस तरह आपने बताया कि प्रोजेक्ट जब चल रहे होते हैं it's very hard to reflect on yourself क्योंकि you're occupied with a lot of other things that are going on. How important do you think it is for young people who are working
right now और वो different projects कर रहे हैं कि उनके लिए कितना ज़्यादा important है आपके नज़रिए में कि वो उनको reflect करना चाहिए? Self-reflection, Self reflection, yes. I mean, people should reflect on everything with the situation they're in. And self-reflection is a privilege जो आपको मिलती तब है जब आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं. Frankly, उससे पहले मिलता नहीं. करना तो चाहिए. In an ideal society, everybody should have the privilege of self-reflection. But हमारे यहाँ बच्चे स्कूल में होते हैं, वो खा जाता है उनको. वहाँ से निकलते हैं तो हम काम में फंसा देते हैं उनको. फिर बीवी और बच्चे, they really don't have time to think about themselves at all. And that is something that is really important if you want to find what makes you genuinely happy. Okay. Most people cannot answer that question with a lot of confidence. So, Acha, getting back to Allied, when you decided, okay, you have 6 months and you started this, you started the company, right? You started the company, and whereabouts you came across the thought of making tiers in the model, and what was the thought process behind it? The thought process behind it was that when we started off, the idea was to build an employee-owned company. जो कॉम्पेंसेशन मेरी पिछली कंपनी दे रही थी उससे क्वांटम बेहतर दे, डिस्टिंक्टली बेहतर दे, नॉट अ मार्जिनल इंक्रीज बट अ वेरी sharply recognizable increase. And I can give you the maths of it to elaborate, but basic objective यही था कि distinctly different थे. अब distinctly बेहतर सैलरी के लिए कुछ distinctly different करने की ज़रूरत थी. अगर आपको distinctly different सैलरी चाहिए है तो you need to learn a different set of skills. You need to be a little bit more sales oriented. You need to be able to take a little more of a risk, and you need to be able to manage yourself properly. And I had done all three of these in my job. So I was very comfortable doing it when I took off. Yeah. But as I started to meet people here, I would tell them कि ये तुम कर लो, and I can give you much more. And I would see them shy away from that risk. And what I realized was कि वो जो दो bands है ना, एक बहुत दो clearly distinct bands नजर आते हैं. अगर आपने कभी वो chemistry पढ़ी हो ना, तो बीच में एक atom होता है और उसके गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं. हाँ जी. तो पहला ऑर्बिट होता है, एक एनर्जी लेवल आपको पहले ऑर्बिट तक ले जाता है, फिर दूसरा एनर्जी लेवल दूसरे ऑर्बिट तक ले जाता है. अच्छा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द घूम रहे होते हैं, इन रियलिटी दे आर स्पेक्ट्रम, दे आर नॉट एक्चुअल ऑर्बिट्स. बट आप उनको क्लियरली देख सकते हैं कि यार यहाँ पे क्लस्टर ज्यादा है और फिर यहाँ पे क्लस्टर ज्यादा है. यहाँ भी ऐसे ही नजर आ रहा था कि रिस्क टेकर्स जो हैं वो एक हायर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यहाँ ज्यादा कमा रहे हैं, और लो रिस्क वाले लोग जो हैं वो निचले ऑर्बिट में फंसे हुए हैं. दे डोंट वांट टू गो फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अदर. So what we realized was कि major issue ही यही है, impediment ही ये है कि वो path gradual नहीं है. It requires a very strong stimulus for him to go from one orbit to the other. वो ऑर्बिट कई दफ़ा होता है कि जी मेरी लड़ाई हो गई है बॉस के साथ, उन्होंने मुझे निकाल ही दिया है, मेरे पैसों की ज़रूरत बड़ी शदीद हो गई है. सो यू फील लाइक यू हैव नथिंग टू लूज एंड देन यू गो ऑल आउट फॉर इट. या आपको अंदर से बड़ी शिद्दत से उसकी आई होती है तो फिर आप इंट्रिंसिकली मैं कर ही देना. बट व्हाट आई फेल्ट वाज कि फॉर अस टू वर्क एज एन इंस्टीट्यूशन वी हैड टू ग्रेजुएट दैट पाथ, स्लोली टेक देम फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर, कि जो अदरवाइज कभी भी स्विच नहीं करेगा उसको भी ये नजर आए कि यहाँ से वहाँ जाना इतना मुश्किल नहीं है. एंड दैट इज वेयर दीज सॉर्ट टियर नोमेनक्लेचर स्टार्टेड टू कम इन, के इसको हम फिर लेयर्स में बना देते हैं, टियर्स 1 2 3. वो एक स्टेप से शुरू होगा, फिर दूसरे स्टेप शुरू होगा, तीसरे उसके इर्द गिर्द और इलेक्ट्रॉन्स भी ये काम कर रहे होंगे. सो वो देखेगा तो कहेगा यार ये दिस इज नॉट दैट हार्ड. और बाकी आप एनवायरनमेंट ऐसी बना दें कि दे आर प्रोपेल्ड फॉरवर्ड. So normally companies they like to keep bigger piece of the pie. So why did you want कि यार employees को भी piece of the pie मिले and they can earn more than what they normally get in working in different companies? Why did you want that? And you could simply have the bigger piece of the pie in general, make by starting your own thing. Yeah, this is a question of self-reflection, and I can give you my best guess of it. I'm not really sure why I am that way, but I studied in Scandinavia. I think that was a big influence. क्योंकि वो that's a very equal
society, Hmm. very equal and just, and that is something that was always at the back of my mind. और जेवर के भी जो मेरा आखिरी साल था, I had quite a lot of autonomy within my team and I had implemented things there. And my thesis was very clear कि consulting जो है ना particularly, it's a people oriented business. You are only as good as your consultant on that day. आप जो मर्जी और आपके पास लटरम पटरम हो, अगर आपका कंसल्टेंट उस दिन उसका दिल नहीं है ना, ही इज नॉट पुटिंग इन हिज बेस्ट, तो आपके सारे प्रोसेस, आपकी सारी टेक्नोलॉजियाँ कस्टमर नहीं रिकग्नाइज करेगा. सो इट्स अ वेरी पीपल ओरिएंटेड बिजनेस, नॉट लाइक अ फैक्ट्री जहाँ मशीन ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ बंदा ही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है. तो ये कि पीपल ओरिएंटेड कंपनी बनानी है तो बिल्कुल क्लियर था ना. Right. और उसको बनाने के लिए उनको कुछ आपको डिस्टिंक्टली बेहतर देना था, जिससे कि वो डिस्टिंक्टली बेहतर परफॉर्मेंस देते ना इन रिटर्न टू इट. सो ये गोल तो बिल्कुल क्लियर था. इसके कॉन्सिक्वेंस में यू प्रोबेबली मेक्स लेस देन you could have made doing it some other way. But my thesis was always कि the pie will get bigger if these people, अगर मैं छोटी fraction भी रख रहा हूँ हर बंदे से, everyone is putting in more of an effort, the overall customer will grow, and so my small share will be bigger in the net that way. That was the reasoning behind it. And that when you meet these people, मुझे जेवर में भी याद है, people within my team, everybody has a story. You know, आपका अगर पेट भर गया ना, तो अब फालतू पैसे आपको कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं देते. लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके नीचे एक बंदा था, वो पहले वैगन पे आता था, फिर वो अब गाड़ी पे आता है, वो उसकी लाइफ में जो तब्दीलियाँ ना, वो आपको ज़्यादा खुशी देने लग जाती हैं. सो you know, unless you're a total jackass, you really don't need to you don't need to eat up everybody else's income. There's enough of it out there for everybody. अच्छा, ये बड़ा एक एटिपिकल सा जिस तरह के मॉडल भी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जिस तरह का पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से एटिपिकल मॉडल है, एक और चीज एटिपिकल है जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया आपके साथ, वो ये कि इट्स नॉट वेरी टिपिकल कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के साथ ट्रांसपेरेंट होता है, स्पेसिफिकली वर्किंग इन दिस कल्चर. सो डिड यू एवर एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ चैलेंज कि वेयर यू आर बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट कि यार तुम काम करो, तुम्हें ज्यादा जो है ना पैसे मिल जाएंगे? वर देयर पीपल हु डिड नॉट बिलीव यू एंड दे सेड कि यार ये इस तरह कैसे हो सकता है, कोई बीच में कोई और चक्कर है, मुझे पूरी गेम नहीं पता? हाँ, नहीं, वेरी कॉमन क्वेश्चन. ये आप आखिर कर क्यों रहे हैं? व्हाट्स इन इट फॉर यू? हाँ, आपको क्या फायदा हो रहा है? Interestingly, even the customers ask me this question. Okay, what's in it for you? Like, well, how can this be an employee-owned company? Yeah. तो तुम क्यों कर रहे हो फिर इसके अंदर काम, etc. Yeah. I think it goes back to that basic question of what makes you happier. Right? Yeah. Everybody assumes that the only way you'll be happier is कि आप ज़्यादा पैसे बना रहे हो. That's just not the case. I think if I was making a lot of money and everybody else around me was miserable, I'd be quite miserable. Yeah. I enjoy the company of intelligent people. I enjoy making a difference to their lives. I genuinely enjoy it. So for me, that's a very pleasurable experience. It makes me happier. Not everybody is like that. Not everybody understands this reasoning, and that is a constant challenge. It's essentially like you're trying to convert people into socialism or something. You know, so it takes a bit of doing and experiencing before you realize that this can also be good. But like I said, I feel passionately about it, and I would put in those hours just to make that case. अच्छा, talking about future. So आपने अपनी एजुकेशन हासिल की, मुख्तलिफ मुल्कों में आपने काम किया, उसके बाद आपने एक कंपनी की बुनियाद रखी और वो माशाल्लाह कंपनी ग्रो करती गई. सो what are your plans now? Do you feel like that you have achieved enough in life, or do you feel like there's more to it? I think for me personally, this year specifically, my focus has been about institutionalizing what we do. अभी हम बहुत हमारे individuals बहुत empowered हैं, and because they're very empowered people, they sometimes push and pull in different directions, and they have different ideas of what the future should look like.
And while that gives us great strength, it is also something to be wary of, that we don't tear ourselves apart through that. So that's been my focus this year. I do feel like I don't have very many more years of being able to do this, and I do want some Okay. succession planning जिसके अंदर this continues beyond myself and Mm. some other people. You know. Yeah. These are demanding careers, and there are times कि जब आप महसूस करते हैं कि अब आपको टाइम ज़्यादा देना चाहिए फैमिली को. Mm. Like my kids are in their teenages, Mm. my parents are in their twilight, Yeah. and I feel like I should be spending more time, More time with them. And I'm very glad that I'm doing this because I can do that. I can Yeah. change my balance Mm. to what suits me. If I was doing a job, I don't have that Never. choice. Mm. You know, I'd probably be a senior manager, director, or CEO type somewhere, and वहाँ तो बहुत demanding Demanding, होती yeah. हैं. तो आपने targets achieve करने हैं और Mm. projects deliver करने हैं और revenue लाना है and whatnot. At least I don't have that problem here. Mm. I can pace it myself. Maybe once my kids are married off or something, I get back on it and Mm. do something new with it. But that's freedom I enjoy. Yeah. That's the whole idea. So that's the freedom that you can choose to go with the flow or choose your own direction to Choose go. your own pace. Choose your own pace. Choose your own Right. pace. Choose your own thing. Interest जो है इंसान के वो कोई static थोड़ी होते हैं. Mm. As you grow, Absolutely. your needs change. बिल्कुल ऐसे. Most people don't realize it. Mm. They think if at 22 everything was about making money, Yeah. then at 50 it'll still be about making money. It is not. No. Mm. I hope it is not. For most people, you go up that Maslow's hierarchy, Yeah. और उसके अंदर you really need to reinvent yourself. And do you think कि जो आपके अंदर एक motivation थी to start your own thing, if you didn't at that particular stage, so in the life that you in the time phase that you are right now, would you have the same motivation to do that all over again? I don't get the question. So आपने जिस एज के अंदर एलाइड स्टार्ट किया, you were all fired up, you had the energy, you had all your thoughts and everything. That was your need at that time. ठीक है, आप intellectual need भी कह सकते हैं और भी different needs थी. So that was associated to that particular age and the time period that you were in. So fast forwarding right now, if you did not take that step at that time, अगर आज के दिन में right now, क्या वो दोबारा से मतलब at this life phase, would you take that step कि यार मैं एक अपनी कंपनी शुरू करता हूँ? Probably not. I think there is a time and a place for everything. Yeah. अल्लाह मैंने हर बंदे के लिए रखी. वो McDonald's का जो फाउंडर था उसने काफी लेट स्टार्ट किया था. Yeah. Like in the 60s or something. Yeah. It's not like कि कोई एज होती है इन चीज़ों की. You can start whenever I suppose. लेकिन हर बंदा एक अपनी एवोल्यूशन से गुजर रहा होता है. किसी के भी सिनेरियो को ना जनरलाइज नहीं कर सकते आप. कुछ लोग बहुत वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, वो जब मर्जी कर लें, उनको कोई कभी भी कोई रिस्क नहीं है ऑफ कैपिटल लॉस बिल्कुल, या टोटली गोइंग बैंकरप्ट और समथिंग. वो इशू नहीं उनको होता. कुछ लोगों की डिपेंडेंसी ज़्यादा हैं, कम है, कुछ को इमोशनली कुछ ड्राइवर्स हैं, कुछ के कुछ हैं. आई कैन गिव यू सो मैनी स्टोरीज ऑन हाउ डिफरेंट पीपल आर ड्रिवन बाय डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर लाइव्स. अभी हमारे पास एक लड़का है, he graduated 22 or something, at 22 or something, and he was fine. He was cruising along in a regular cushy job, happy. And then his mother was diagnosed with cancer, and the family sold their house. It was a big shock for them, and the mother was very reminiscent कि घर बिक गया मेरी वजह से. तो that kid at now 28 or something has made it a mission of his life कि वो घर जो था ना, जो मेरी माँ को बहुत अजीज था, वो मैं वापस लूंगा. मैं उनसे वादा किया था, मैं उनको घर बना के दूंगा. That's what drives him. Like he could not have that drive at 22. The circumstances were just not there. So everybody has a different trigger, everybody has a different motivation, and you can obviously change your focus to find your motivation. हर बंदे की कुछ ना कुछ होती है.
इट्स अ प्रोसेस वर्थ लुकिंग एट Yeah. कि आपको क्या चीज़ ड्राइव करती है और फिर उस ड्राइव को आप रीच एनालाइज करते हैं। मुख्तलिफ एज में मुख्तलिफ होती है। Yeah. इट्स नॉट अ स्टैटिक। आपने कोई डिफरेंस देखा है इन द माइंडसेट ऑफ, जिस तरह आपने बताया कि डिपेंडेंसी और इस तरह के फैक्टर, ऑब्वियसली मेल्स वर्किंग इन योर कंपनी they might have it, or that might be their trailing force या trailing factor. आपने कोई डिफरेंस देखा है मेल और फीमेल्स के माइंडसेट में कि उनको क्या चीज ट्रिगर करती है? हाँ हाँ, for sure. I mean, typical male stereotyping, but the typical male is societal pressure बहुत ज़्यादा होता है on earning. वो ग्रेजुएशन के बाद से शुरू होता है और शादी के बाद और बढ़ता है और उसके बाद बच्चों के बाद और बढ़ता है, बूढ़े माँ बाप के बाद और बढ़ता है। And most people, by the time they're done with all this, they're dead. You know, अपना घर बनता है रिटायरमेंट के कहीं आसपास ही और फिर कहीं जाके आप you look back and you realize कि पता नहीं सारी उम्र बच्चों की शादियां, शादियों पे लगा खर्चे and all that. Literally, you're pretty much done for by the end of it. I think you miss out on a lot of opportunities in life because of that. तो सॉरी मैं आपका सवाल ही भूल गया। So यही है मेल और फीमेल के अंदर फीमेल जो है ना, we don't have a lot of females in the entrepreneurial space क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा उनको इंकरेज नहीं करती टू इट। वो शादी के बाद जनरली बच्चों में लग जाती हैं, 6-8 साल लग जाते हैं उसमें, उस भंवर में से निकलते। तो वो 6-8 साल के अंदर वो बहुत कुछ भूल चुकी होती हैं और बहुत सी ड्राइव ख़त्म हो चुकी होती है और सोसाइटी भी जनरली नहीं पसंद करती इस बात को कि जी वो बच्चे छोड़ के वो ये कर रही है और वो बच्चे छोड़ के काम में लगी हुई है और समथिंग। आई एम नॉट एडवोकेटिंग इट बट दैट्स द वे जनरली सोसाइटी। सो फ्रैक्शनली स्पीकिंग औरतें बहुत कम करती हैं। जो हमारे पास कर रही हैं, मतलब ऐसी खवातीन हैं हमारे पास जिन्होंने बेबी मॉनिटर सामने रखा होता है एंड देयर इन अ कस्टमर मीटिंग व्हाइल दे आर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। वहाँ नैनी वैनी रखी होती है और वो दे आर ट्राइंग टू जगल बोथ थिंग्स। उसके हस्बैंड्स कोऑपरेटिव होते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। I have a daughter and I would love for her to get in this field. उनकी मोटिवेशंस डिफरेंट होती हैं। जो मैंने नोट की हैं उसमें इट्स मोर अबाउट इम्प्लीमेंटिंग व्हाट दे हैव लर्नड टाइप ऑफ थीम्स आपको नज़र आती हैं कि जी मैंने ये पढ़ा है तो ज़ाया ना हो जाए, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। ऑटोनॉमी नज़र आती है। देयर आर सम वुमेन जो नहीं डिपेंडेंसी चाहती हैं अपने मियाँ पे, अब्बू पे, फलाने पे फॉर वेरियस एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। They don't want that dependency. I think overall they probably exhibit very similar traits as men, but वो जो societal environmental factor है ना वो skew कर देता है चीज़ों को। Societal pressures दोनों के different होते हैं। But as people, I think men and women are very similar in terms of what drives them. What drives them? वही autonomy है, वही need for change है, वही want for money है। Drivers तो वही हैं, लेकिन वो आप सोसाइटी ले लेती है उनसे। सोशल कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ है लेकिन साइकोलॉजिकल ड्राइवर्स एक ही हैं। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट तो करती है, हाँ, उसको हम एक खास हद से ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। हमारा थीसिस यहाँ कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने एनवायरनमेंट दी हुई है, हाँ, जो मर्जी आके उसको यूज करके जो मर्जी बन जाए, हम उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। राइट। अच्छा, एक लास्ट में सवाल ये पूछूंगा कि जो लोग टीयर 1 से ट्रांजिशन करके टीयर 2 पे पहुंचना चाह रहे हैं, उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे उस स्पेसिफिक फेज में? एनी टिप्स एंड ट्रिक्स या डूज एंड डोंट्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस दैट्स गोना हेल्प देम टू ट्रांजिशन perfectly into the TA 2? I have a bunch of bullets on this. Frankly, I don't remember all of them. वो knowledge base के अंदर ना एक पूरा section है on the things you will learn as you make this transition, the things you will learn that will prompt you to make this transition, and then as you make the transition, तो आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होगा। I'm not sure which ones you wanted to talk about, but अगर कोई बंदा अपनी जॉब छोड़ के अपना कुछ करना चाह रहा है, if that's our scenario, तो like I said, this entire allied exercise has been about sharing experiences. Yeah. Right? So हमने जो कर लिया, हमने सोचा
आने वालों के लिए उतना मुश्किल ना रहे, जिस रास्ते हम गुजरे हैं वो ब्रेड क्रम्स छोड़ते जाएं फॉर देम. सो मैंने खुद तो यही किया है कि मैंने 6 महीने का अपने आप को टाइम दिया, एंड आई टुक ऑफ एंड आई सेड कि अब मैं इसको इफ आई कैन डू इट, देयर इज अ यू हैव क्वांटिफाइड द रिस्क. जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी आपने उनको रैशनलाइज करके लिख लिया है, अब आप चल पड़े हैं. तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज यू आर एंजॉयिंग देम, यू विल प्रॉब्ली पुश थ्रू देम. तो इस स्पिरिट के साथ चल पड़े. और अगर 6 महीने बाद ना, इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन ऑलवेज फाइंड अनदर जॉब, डू दिस ऑल ओवर अगेन. So stop being afraid, I think, is probably one of the single most important things between tier 1 and 2 is your appetite for risk. Your perception of risk. आपको अगर मैं कहूँ कि जी आपने जॉब छोड़ के अपना काम करना है, what is stopping you? So people will bring up things like मुझे काम कैसे मिलेगा, मैं बैठूंगा कहाँ, पैसे कैसे रिसीव होंगे, तो ये कैसे होगा, तो वो कैसे होगा. There's a lot of sort of naysaying going on there. So there is a bunch of technical answers to these questions. कि आप ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अगर काम का डर है कि अगला प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है. You do Upwork, or you can do sales this way or sales that way. And maybe there's a bunch of things you need to learn, but there are solutions to these problems. And you have 6 months to find them. Yeah. You know, so we can give them a technical reasoning on what to do to avoid this risk. But then there are psychological aspects to risk. कि आप एक ही चीज़ को देख के एक बंदा बहुत डर जाता है और एक बंदा बिल्कुल नहीं डरता. इसमें उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ एफिकेसी, उनकी सेल्फ वर्थ, ये बहुत ज़्यादा ड्राइव करती है कि वो कितना डरेगा इससे. वो डर के रुक जाएगा, वो डर के मुड़ जाएगा, या वो डरता हुआ भी चलता रहेगा. I think that is something people should think about a little bit before they get set off. कुछ ना कुछ उनको अपने बारे में ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो अपने डर को काबू करते रहें और चलते रहें. बस कीप मूविंग. डर लगता भी है तो कोई बात नहीं, चलते रहें. कीप लर्निंग अबाउट हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स एंड देन देयर ओनली बी सॉल्यूशंस. इफ एवरीबडी वाज डूइंग इट, so then this would probably not be a very interesting thing to do. Yeah, of course. You know, so mastery of the self is important. Yeah. I'm not saying कि आपको योगी बन जाए पहले और आप कोई 4-6 वो करके आए चिल्ले तो फिर आप इस काम में घुसे. I think the experience actually helps you discover yourself. You know, you think कि मैं ये नहीं कर सकता, but when you actually try it, like तो हो ही रहा है यार. I didn't know I had that in me. So just do it. You know, don't think too hard. Hang around with the right people. I think that's really important. Because if you're in a company जहाँ सारी employee non risk takers हैं, उन्हीं के साथ आप फिरते हैं और उन्हीं के साथ आप खाना खाते हैं और उन्हीं के साथ आप रहते हैं, don't expect any other radical shift. So change your company, get in the right group of people जो आपसे थोड़ा आगे गुजरे हैं, जो आपके थोड़ा पीछे आ रहे हैं. जो पीछे से आ रहे हैं उनको देख के आपको अंदाजा होता है that you are making progress. और जो आगे गुजर गए हैं उनसे आपको अच्छी एडवाइस भी मिलती है और इंस्पिरेशन मिलती है, समझ आता है, इंस्पिरेशन भी मिलती है. बंदा किसी को कहता है चुड्डू ने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता. Ordinary people do amazing things just because they want to, you know. And like I said, quantified. ये पाकिस्तान है, यहाँ कोई आपको nobody should be selling you a dream that you can't meet. रियलिस्टिक अपने आप को एक स्पेस दे दें 6 महीने की, साल की, जितने आपके पास फाइनेंशियल स्पेस है, और उसके अंदर गिव इट योर ऑल. नहीं होता तो कोई बात नहीं, जॉब कर लेना. और जिनके पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं है एज सच, उनके लिए अच्छा ये मिस नॉर्मर है कि फाइनेंशियल स्पेस जो है वो सिर्फ आपकी अपनी सेविंग से आती है. अमेरिका में अगर आप स्टार्टअप्स को पढ़ें तो कोई स्टार्टअप किसी के जाती पैसों से नहीं चलती. बिल्कुल. वो फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड होता है, फाउंडर को अपने कुछ पैसे डाल देता है, अब वो में से कहीं से कुछ उधार ले लेता है, बट 99% ऑफ द मनी कम्स एक्सटर्नली. अगर आपके पास आइडिया है और आपके पास विल है और आप वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो देयर आर इनफ प्लेसेस आउट देयर टू गिव यू द मनी टू कंटिन्यू टू डू दैट. इट्स जस्ट अबाउट लर्निंग हाउ टू प्रेजेंट योर केस to these people. Again, this is one of those technical things जो आपको along the journey सिखाई जा सकती हैं. कैपिटल कैसे रेज करना है, सेल्स कैसे करनी है,
डिलीवरी कैसे मैनेज करनी है, ये आप सीख सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गॉड गिवन होती है। Hmm. If you are set off on the right path, Hmm. so then there's always a solution to these problems. कोई Right. ऐसा issue नहीं है। Right. पैसे is just one of those things. Hmm. Right. Thank you so much, sir. बड़ा मज़ा आया और बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रही आपकी। एंड आई होप कि जिन लोगों को इस फेज से, स्पेशली इस मरले से गुजरे हैं, वो आर ट्राइंग टू ट्रांजिशन इनटू T2, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो I think it will be very session will be very informative for them. Yeah, do your thing, man. Thank you so much.